देखो ABP Sanjha टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 ते। देखो ABP Sanjha टाटा स्काई चैनल नंबर 19। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण ब्रिटेन के कई हिस्सों के विच लॉकडाउन लाया गया है। वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के विच सख्ती वधाई गई है। बार, पब, रेस्टोरेंट बंद किए गए हैं। इनडोर और आउटडोर इकट्ठ नूं सीमित किया गया है। ब्रिटेन च कोरोना वायरस के वधदे मामलों नूं ठल पाउण दे लई वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड च सख्त पाबंदियां लागू कीतियां गईयां ने। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उन्होंने कैबिनेट कोरोना के फैलाव के नवे अंकड़ियां की समीक्षा कर सकती है। सरकार माहिरां की राय बाद पाबंदियां लाउण ते विचार कर रही है। इंग्लैंड च फिलहाल प्लान बी के तहत पाबंदियां लागू कीतियां गईयां ने, जिस दे विच वर्क फ्रॉम होम, वड्डे प्रोग्राम च जाण मौके फेस मास्क और कोरोना वैक्सीन नूं लाजमी किया गया। Some areas are a bit quieter, some are not, but it hasn't. We see that it hasn't affected like all the Christmas lights and decorations that are around London. It looks so pretty. So we've got out a bit earlier to try and avoid queues, but we've seen that there's quite a few people about already. So I'm just trying to see if I can get hold of something for my little boys, something for myself, and then I'm here with my mum. इस सब दे विचाले वेल्स दे विच नाइट क्लब बंद रहणगे। पब, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर दे विच 6 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। इनडोर इकट्ठ च 30 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। आउटडोर च 50 लोगों को इकट्ठे होने की मंजूरी दी गई है। इस तो इलावा स्कॉटलैंड दे विच भी पाबंदियां सख्त ने। स्कॉटलैंड च वड्डे प्रोग्राम च सोशल डिस्टेंसिंग लाजमी की गई है। इनडोर च 100 के इकट्ठ को मंजूरी दी गई है। आउटडोर च 200 के इकट्ठ को मंजूरी दी गई है। नाइट क्लब 3 हफ्ते के लिए बंद रहणगे। उत्तरी आयरलैंड दे विच नाइट क्लब बंद कर दिए गए ने। लोगों को एहतियात वरतन दे लई कहा जा रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर बिजनेस ते भी हो रहा है। Firstly, we're announcing £1 billion in financial grant support, which means eligible hospitality companies will be able to claim a cash grant worth up to £6,000. Secondly, we're providing £30 million to top up our successful cultural recovery fund to support institutions like theatres and museums. And lastly, we're reintroducing our statutory sick pay rebate scheme so that small and medium-sized companies can claim compensation for the government for the costs of sick pay for their employees. Taken together, I'm confident that these measures will help hundreds of thousands of businesses and the millions of people that they employ. I will always respond proportionately and appropriately to the situation that we face. People can have confidence in that. But where we are now, we've responded, I think, generously today. The grants that we've outlined, up to £6,000, are comparable to the grants that we provided for hospitality businesses when they were completely closed earlier this year. So there's a benchmark for you. Also, it's important to remember we have support already in place that lasts all the way to next spring. So, for example, a reduced rate of VAT for the hospitality and tourism sectors, and this year they are benefiting from a 75% discount on their business rates bill. Those types of things last all the way to next March to support the industry. ब्रिटेन च कोरोना कारण लाइयां पाबंदियां दा विरोध हो रहा है। कई शहरों च सरकार ने सख्ती वधाई, जिस कारण ये लोग सड़कों ते ने। कई थावां दे उत्ते पुलिस ते प्रदर्शनकारियों दे विचाले झड़प भी हुई है। लोग खुल दी मंग कर रहे ने। Concerned by the huge surge in the Omicron variant. Over the last 24 hours, we've had the largest number of new cases since this pandemic began, more than 26,000. Hospital admissions are going up, but also staff absences are going up by a massive level. So I've taken the decision, in consultation with our partners, to declare a major incident today. It's a different pressure this time. So the pressure is the sickness levels in staff. So many of our staff are also positive with the new variant. Many of them are contacts of people with the new variant. So therefore our workforce is depleted right now. If it really keeps getting worse, I guess that's why it has to be down. So I guess I'm okay with it. The knowledge that they have is more than the knowledge I have about it. So I would go with the flow. Does the restriction apply to the government as well, or is it just to everyone else? Would be my question. ब्रिटेन च वध रहे ओमिक्रॉन के केसां का असर दूजे मुल्कों ते भी हो रहा है। यही वजह है कि हुण दक्षिणी अफ्रीका तो बाद दुनिया ब्रिटेन ते यात्रा पाबंदी ला रही है। ब्रिटेन के सेहत मंत्री ने कहा कि नवा वेरिएंट तेज़ रफ्तार दे नाल फैल रहा है, जिस कारण लोगों को वैक्सीन लवाउण अते एहतियात वरतन की अपील की गई है।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 44 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Omicron spiking now in London and some other parts of the country. Here in the capital, it probably represents about 40% of the cases. By tomorrow, it will be the majority of the cases, and it's increasing the whole time. And sadly, yes, Omicron is producing hospitalizations, and sadly, at least one patient has now been confirmed to have died with Omicron. So I think the idea that this is somehow a milder version of the virus, I think that's something we need to set on one side and just recognise the sheer pace at which it accelerates through the population. We do have a ready supply of tests. The site says there aren't any left. You can't order them. We do have a ready supply of lateral flow tests. If you can't get one online for any reason, then there are ample supplies in the shops. But what I think, if I may say so, what that also shows is that people are doing the sensible thing and getting tested. ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के 99 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ 'ਚ ओमिक्रॉन ਦੇ ਮਾਮਲੇ दोगुना हो रहे ਨੇ। कोरोना ਦੇ ओमिक्रॉन वेरिएंट ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ने भी सख्त पाबंदियां लागू कीतियां ने। पंजाब और पंजाबियत की परछाई अब देखें एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। एबीपी सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।